before this Bhagavad Gita war, all these different, jaise Arjuna is good in archery, Bhima is good in Gada and the strength, and then all the different Pandavas had different strength. Sahadev had the strength of, or he has the skill of astrology, Jyotish Shastra mein, astrology, alignments of planets, and what specific puja can be done at what particular time, so that the astrological arrangements is such and person is blessed with different powers. So Sahadev was very expert in these astrological calculations. So before the war started of Bhagavad Gita, Duryodhan goes to Sahadev. Pandavas, Duryodhan goes to Sahadev and he asks, ऐसा कौन से प्लानिटरी अलाइनमेंट्स और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस में मैं क्या पूजा ऐसा करूं ताकि मेरा ये युद्ध जो होने वाला है उसमें मेरी जीत निश्चित हो जाए. How can I make sure that I win this war? What kind of worship I have to do and when I have to do? And those days they were very डिफरेंट देन टुडेज डेज. आज के दिन में कोई ऑपोजिशन वाला आएगा कुछ पूछेगा तो वो कुछ उल्टा सीधा बता देगा. बट पांडवास एंड इन दोज युगा इट वाज वेरी डिफरेंट एज. सहदेव वेरी क्लियरली मेंशन्ड अमावस्या नाइट you do this Kal Bal Yoga, where you get the strength. At this Amavasya night, at this specific time, you do this particular worship. It's called Kal Bal Yoga, and then you get the strength and you will 100% win the war. And दुर्योधन गॉड, अरे वाह यार मुझे तो मिल गया. सहदेव ने बता दिया कि अभी मैं जीत 100% निश्चित रूप से मैं कैसे जीत सकता हूँ. So Sahadev told all the things very clearly, detailed and everything. And it was coming in about 2 to 3 days only. That Amavasya night was coming. So Duryodhan started preparing. जैसे भी सहदेव ने बताया था सब कुछ, he started preparing all the paraphernalia, that specific location, क्या क्या ingredients चाहिए वो काल बल योग यज्ञ करने के लिए, वो सब दुर्योधन ने तैयारी शुरू कर दी 2-3 दिन पहले. अभी कृष्णा इज ऑल नोइंग, कृष्णा नोज एवरीथिंग, क्या हो रहा है. भगवान कृष्णा को पता चल गया कि दुर्योधन सहदेव के पास गया है. सहदेव ने सब कुछ क्लियरली बता दिया है. एंड नाउ दुर्योधन हैज स्टार्टेड प्रिपरेशन एंड दुर्योधन विल win the war guaranteed because that is all the alignments, astrological arrangement is done in that way. What does Krishna do? Because that was the Amavasya was day after tomorrow. Krishna starts next night. उसके दूसरे दिन ही what Krishna does, he goes on the bank of river Yamuna and पितरों को जब तर्पण करते, oblations to the forefathers or departed souls is done on Amavasya night. So Krishna sits on the bank of Yamuna and starts offering oblations to the forefathers. पितरों को तर्पण करना, सारा arrangement करके सारे साधुओं को सबको बुला के प्रार्थना, प्रेयर्स, मंत्र सब कुछ शुरू कर देता है. On the next day, it is not Amavasya day. The पितरों का तर्पण सिर्फ अमावस्या की नाइट को ही होता है. But Krishna starts preparation on the bank of river Yamuna. He's sitting, all the sadhus and everyone is coming, and they are all praying. And एक साधु पूछता है, अरे ये क्या हो रहा है, अमावस्या तो कल है, आज क्यों ये कृष्णा ये सारे प्रिपरेशन और हमको बुला के ये प्रेयर्स करने को बोलते हैं. तो दूसरा साधु बोलता है, अरे यार कृष्णा को कौन आर्ग्यू करेगा. Who can argue Krishna? If he is doing, चुपचाप करो, बैठो. He is the supreme lord. We can't argue with him. He has this plan. Whatever he is, we just have to do it. So सारे साधुस यमुना के किनारे बैठे हैं and they are offering the prayers which are supposed to be done as Amavasya night. And all these sadhus, Krishna preparation, ingredients that पितरों के तर्पण का सब कुछ हो रहा है. And looking at that, the sun and the moon, Surya Dev and Chandra Dev, they get confused. सूर्य देव एंड चंद्रदेव बोलते हैं, ये कृष्णा कर क्या रहे हैं, अमावस्या तो कल है, आज ये सब क्यों पूजा कर रहे हैं, फॉर फादर्स का ऑब्लेशंस आज क्यों कर रहे हैं. And they get confused. तो अभी कृष्णा बैठे हैं यमुना नदी के किनारे, सारे साधु सब लोग बैठे हैं, पूजा हो रही है, मंत्र का उच्चारण हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, ऑफरिंग हो रहा है फॉर फादर्स का. उस टाइम पे चंद्रदेव एंड सूर्यदेव, they are fully confused. They are coming to Krishna and they are saying कि what is happening, dear Krishna, अमावस्या कल है, क्या आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, क्या आपको पता नहीं कैलेंडर का डेट में मिसकैलकुलेशन हो गया क्या, what is the problem. And Krishna is saying, so what do you want to say. तो सूर्यदेव एंड चंद्रदेव कृष्णा को साइड में ले जाते हैं, बोले सबके सामने, I don't want to have this discussion in front of all these sadhus, otherwise they will be confused. Let's go separate. तो थोड़े दूर जाते हैं पेड़ के नीचे. And Krishna is standing, Chandradev is standing here, Suryadev is standing here, Krishna is here, and Chandradev and Suryadev is telling to Krishna कि अरे अमावस्या कल है, आज आप ये ऑफरिंग करो, ये सब वेस्ट है, आज कर ही नहीं सकते, वो अमावस्या की नाइट पे कर सकते हैं, आज आप लोग क्यों कर रहे हो. Krishna says, what is अमावस्या? When sun and moon comes in the straight line
that is called Amavasya. Right now, you and you, sun god, moon god, Chandradev Sundar, आप एक दूसरे के सामने खड़े हो. That means this is Amavasya night and this will offer. उसी टाइम पे Krishna tells all the Pandavas, you do Kalbal Yog now because sun and moon are standing right next to facing each other in one line. That means Amavasya का जो influence होने वाला है वो अभी है. And he makes sure the Pandavas does this Kalbal Yagya and they get the strength and they win the war. And next day, when Duryodhana is doing, it was not Amavasya night because sun and moon came on the previous day. So Krishna changes the whole Amavasya, the arrangement of the Chandradev and the Suryadev planet, just to make sure his devotees win the war. They are being looked after. What Krishna's arrangement is, dear devotees, क्या क्या करते हैं. And if you see this, ये दो पर्पट आप पढ़ोगे ना प्रभुपाद के, you will realize भगवान हमको बुला भी देते हैं, हम हमारे लिए ये मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन भी करते हैं, हमको एंजॉय भी करने देते हैं. जो जो भी हमारे डिजायर्स है, whatever we wanted, he is giving, but he is giving little problems so that we can understand that we are not meant to be here, and we will